गल कीती। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू साल विच भारत दा आर्थिक वाधा सारियां वड्डियां आर्थिकतावां दरमियान सब तो ज्यादा 8.9% रहन दा अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस नाल देश दी मजबूती ते मुड़ सुरजीती दा प्रगटावा हुंदा है। निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी विच विश्व बैंक दी विकास कमेटी मीटिंग विच हिस्सा लिया। मीटिंग दौरान खजाना मंत्री ने कहा कि भारत ने स्वेच्छा नाल सारे देशां नाल कोविड वैक्सीन इंटैलीजेंस नैटवर्क प्लेटफॉर्म कोविन पेश कीता है ते जनतक भलाई दे होर प्लेटफॉर्मां लई सहायता करन दा चाहवान है। यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ਅਤੇ तकनीकी सिक्ख्या बारे सर्व भारती काउंसिल AICTE ने विद्यार्थियों ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यूजीसी ਅਤੇ AICTE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਜਯੋਤਸਵ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1857 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜਯੋਤਸਵ ਵੀਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ आजादी का अमृत महोत्सव तहत करवाया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक देश विच 187 करोड़ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 19,13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 19 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਪਈਆਂ ਨੇ। IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ DY ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬੌਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके केंद्री प्रबंधित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। ਉਹ सांबा जिले ਵਿੱਚ ਪੱਲੀ ਵਿਖੇ राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह ਵਿੱਚ शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मन की बात प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਇਨਾਮ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वो वहां सांबा जिले में पल्ली में पंचायती राज कौमी दिन की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल मन की बात प्रोग्राम में अपने नजरियात और ख्यालात पेश करेंगे। कल मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों के साथ वर्चुअली बात की है ताकि गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां और इदारे कायम किया जा सकें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तीसरे पहर भोजपुर जिले में जगदीशपुर में विजय उत्सव की तकरीबात से खिताब करेंगे और आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, जबकि मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से।
वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल तकरीबन सुबह 11:30 बजे कौमी पंचायत राज के दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और मुल्क भर की तमाम ग्राम सभाओं से खिताब करेंगे। वो सांबा जिले में पल्ली पंचायत के दौरा करेंगे। जनाब मोदी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की मालियत के कसीर रुखी तरक्याती इकदामात का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम बानिहाल काजीगुंड रोड सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, जिसे 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत से तैयार किया गया है। 8.45 किलोमीटर तवील ये सुरंग बानिहाल और काजीगुंड के दरमियान सड़क के फासले को 16 किलोमीटर कम करके और सफर के वक्त में 1.5 घंटे से ज्यादा कम वक्त लगेगा। जनाब मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के सड़क के 3 पैकेजेस का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिन्हें 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत से तामीर किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम अमृतसर सरोवर पहल का भी आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम अमृत सरोवर पहल का भी आगाज करेंगे। इसका मकसद मुल्क के हर एक जिले में 75 आबी इदारों को फरोग देना, उनकी तजदीद नौ करना है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये इस सिलसिले का 88वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो इस प्रोग्राम को हिंदी नशरे के फौरन बाद इलाकाई जबानों में नश्र करेगी। इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को शाम 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल शाम तकरीबन 5 बजे मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड तफवीज किया जाएगा। यह अवार्ड भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में कायम किया गया है, जिनका इस साल फरवरी में इंतकाल हो गया है। ये अवार्ड हर साल किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा जो कौम और अपने मुल्क के लिए गैर मामूली, काबिल दीद और मिसाली खिदमात अंजाम देगा। अवार्ड का ऐलान करते हुए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने कहा कि जनाब मोदी एक बैनुल-अक़वामी मुहिब्बे वतन है, जिसने हिंदुस्तान को आलमी क़यादत की राह पर गामजन किया है। जनाब मोदी को एक तहरीक करार देते हुए तंजीम ने कहा कि वो अजीम तरीन लीडरों में से ऐसे लीडर हैं जो हिंदुस्तान की शानदार तारीख में पहले कभी नहीं हुए। भारत पोस्ट ने अवाम को सर्वे और क्विज की बहुत सी फर्जी वेबसाइट्स के जरिए सब्सिडी और इनामात फराहम करने के दावों के खिलाफ खबरदार किया है। वजारत मवासलात ने कहा कि हालिया दिनों में भारत पोस्ट ऐसी मुख्तलिफ वेबसाइट्स का मुशाहिदा कर रही है जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया और ईमेल्स और SMS पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बहुत से सर्वे के जरिए सरकारी सब्सिडी फराहम कराने का दावा किया जा रहा है। वजारत ने कहा है कि भारत पोस्ट सर्वे पर मबनी सब्सिडी, बोनस और इनामात जैसी किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज अमेरिका की कई मुमताज यूनिवर्सिटियों के साथ वर्चुअल तौर पर बातचीत की, ताकि अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां और इदारों के कयाम के इम्कानात का पता लगाया जा सके। वर्चुअल बातचीत में अमेरिका की 14 यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बैनुल-अक़वामी माली खिदमात के मराकज की विरासती सलाहियत को तस्लीम करते हुए गिफ्ट सिटी में बजट एलानिये ने माली बंदोबस्त, फिनटेक, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और अर्जियात में कोर्सेज की पेशकश करने के लिए आलमी दर्जे की गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को इजाजत देने की राह हमवार हो गई है। वजीर खजाना ने माली खिदमात की सनत के साथ साथ गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC इस मांग को पूरा करने में जबरदस्त ताउन दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और तकनीकी तालीम की कुल हिंद कौंसिल यानी AICTE ने तलबा को सलाह दी है कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान न जाएं।
यूजीसी और एआईसीटीई के जरिए जारी एक अवामी नोटिस में ये उजागर किया गया है कि अगर कोई ऐसा भारतीय बाशिंदा या बैरून मुल्क भारत का शहरी जो पाकिस्तान के किसी तालीमी इदारे में दाखिला लेना चाहता है, वो पाकिस्तान में हासिल करदा इस तरह के तालीमी अहलियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान में रोजगार हासिल करने या आला तालीम हासिल करने के लिए अहल नहीं होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि रवा साल में भारत की इक्तसादी पेशरफ्त का तखमीना 8.9% लगाया गया है, जो कि तमाम बड़ी मईशतों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की लचक और मुस्तहकम बाजियाबी की अक्कासी करती है। मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन डीसी में आलमी बैंक की तरक्याती कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजय उत्सव तकरीबात से खिताब करेंगे। 23 अप्रैल 1858 में अजीम भारतीय मुजाहिद आजादी वीर कुंवर सिंह की बरतानवी फौजियों पर फतेह की याद में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 की भारतीय बगावत की क़यादत की थी। विजय उत्सव का आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एहतमाम किया जा रहा है ताकि वीर कुंवर सिंह की दिलेराना कारनामों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी जंग के बारे में नौजवान नस्ल को आगाह किया जा सके। बिहार में बीजेपी वर्करों ने 12 जिलों से लोगों को जमा करने का मंसूबा बनाया है और 23 अप्रैल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जगदीशपुर में 75,000 से ज्यादा कौमी परचम इज्तिमाई तौर पर लहराने का एहतमाम करने का भी मंसूबा बनाया है। मरकजी हुकूमत ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद को 10,000 तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने 26 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 406 अजला में 3,579 ब्लॉकों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क 2025 तक भारत को टीबी से पाक बनाने के तई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस मकसद को मेयारी सेहत देखभाल और जदीद तरीन इलाज तक रसाई को यकीनी बनाकर हासिल किया जाएगा। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 187 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि कल 19,13,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के बैलेंस और गैर इस्तेमाल शुदा डोज अभी तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अभी तक 192 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे नवी मुंबई के डॉक्टर के.वाई. पाटिल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान मैच खेला जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वजीर आजम कल मन की बात प्रोग्राम में अपने नजरियात और ख्यालात पेश करेंगे। कल मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों के साथ वर्चुअली बात की है ताकि गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां और इदारे कायम किए जा सके। और आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। Good afternoon. This is All India Radio. I am Valsa Williams and with me is Rupinder Kaur Chawla with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Union Territory of Jammu and Kashmir tomorrow to attend National Panchayati Raj Day function at Palli in Samba district. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in the Man Ki Baat program tomorrow. First Lata Dinanath Mangeshkar Award to be conferred upon Prime Minister Narendra Modi in Mumbai tomorrow. Finance Minister Nirmala Sitharaman interacts virtually with several universities of the United States for setting up foreign universities and institutions at Gift City in Ahmedabad.
Defence Minister Rajnath Singh to honour the war heroes of 1971 Bangladesh Liberation War in Guwahati. Union Home Minister Amit Shah addresses Vijayotsav celebrations at Jagdishpur in Bhojpur district of Bihar. Country is marching rapidly towards making India TB-free by 2025, says Health Minister Dr. Mansukh Mandavia. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari inaugurates and lays foundation stones for 16 national highway projects in Jalgaon district of Maharashtra. DD Sports to telecast live Khelo India University Games starting from tomorrow. In Santosh Trophy Football Championship, Karnataka to take on Manipur at Malappuram, while Odisha to face Gujarat at Manjeri today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders to take on Gujarat Titans in Navi Mumbai, and Royal Challengers Bangalore to face Sunrisers Hyderabad in Mumbai today. Prime Minister Narendra Modi will visit the Union Territory of Jammu and Kashmir to participate in the celebration of National Panchayati Raj Day at around 11:30 a.m. tomorrow and address all the Gram Sabhas across the country. He will visit Palli Panchayat in Samba district. During the visit, Mr. Modi will inaugurate and lay the foundation stone of multiple development initiatives worth around 20,000 crore rupees. The Prime Minister will inaugurate the Banihal-Kazigund Road Tunnel built at a cost of over 3,100 crore rupees. The 8.5-kilometer long tunnel will reduce the road distance between Banihal and Kazigund by 16 kilometers and reduce journey time by around 1.5 hours. Mr. Modi will also lay the foundation stone of 3 road packages of Delhi-Amritsar-Katra Expressway being built at a cost of over 7,500 crore rupees. The Prime Minister will also launch the Amrit Sarovar initiative. It is aimed at developing and rejuvenating 75 water bodies in each district of the country. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people in the country and abroad in the Mann Ki Baat program on All India Radio at 11 a.m. tomorrow. It will be the 88th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast on the entire network of All India Radio and Doordarshan, AIR News website and News on AIR mobile app. It will also be streamed live on YouTube channels of the AIR News, DD News, PMO and Information and Broadcasting Ministry. AIR will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The regional language versions will also be repeated at 8 p.m. Prime Minister Narendra Modi will attend the Master Dinanath Mangeshkar Awards ceremony in Mumbai at around 5 p.m. tomorrow. On the occasion, Mr. Modi will be conferred the first Lata Dinanath Mangeshkar Award. This award has been instituted in memory of Bharat Ratna Lata Mangeshkar, who passed away in February this year. The award will be given annually to a person who has made a path-breaking, spectacular and exemplary contribution to the nation and its people. Finance Minister Nirmala Sitharaman today interacted virtually with several distinguished United States universities to explore the opportunities of setting up foreign universities and institutions at Gift City in Ahmedabad. Representatives of 14 US universities took part in the virtual interaction. Recognizing the inherent potential of the International Financial Services Centers IFSC, the budget announcement paved the way for allowing world-class foreign universities to offer courses in financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics in Gift City. The finance minister spoke about the win-win opportunities for the financial services industry as well as the foreign universities operating out of IFSC. She said as IFSE acquires critical mass with growing concentration of financial services industry, demand for high-quality human capital is expected to increase significantly. She added, foreign universities and IFSC could contribute towards addressing this demand. Defence Minister Rajnath Singh will visit Assam today to participate in a function in Guwahati honouring the war heroes of 1971 Bangladesh Liberation War. Assam government has decided to honour the personnel of the armed forces from the state who sacrificed their lives and who had participated in the 1971 Bangladesh Liberation War.
The state government will honor a total of 105 personnel who had participated in the 1971 war, including 9 personnel from Assam who sacrificed their lives during that war. Assam Governor Professor Jagdish Mukhi will attend the program as the guest of honor, and Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma will also attend the program. There are several officers and personnel from Assam who played a catalyst's role in the Bangladesh Liberation War, and they trained and equipped the Mukti Bahini fighters to take on the Pakistani army. Health Minister Dr. Mansukh Mandavia has said there is a great enthusiasm among people across the country for availing quality healthcare services at block-level health melas. The mela was organized at more than 1 lakh Ayushman Bharat Health and Wellness Centers in at least one block in each district of the state and union territories from the 18th to the 22nd of April. In a tweet, Dr. Mandavia said the government has provided free diagnostic services and medicines at the health melas. The Union Health Ministry said on the 5th day of the Health Mela, more than 4,53,000 people participated, and health melas were organized around 496 blocks across the country. More than 59,000 Ayushman Bharat Health Account (ABHA) IDs were created, and 17,000 Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Golden Cards were issued, in addition to thousands of screenings being done for hypertension, tuberculosis and diabetes. The Health Minister has said the country is marching rapidly towards making India TB-free by 2025. In a tweet, Dr. Mandavia said this will be achieved by ensuring access to quality healthcare and advanced treatment. He said the Narendra Modi government is working with an aim to defeat TB by 2025. The minister said the incidence rate of TB has reduced to over 34%. In 2015, the incidence rate of TB was 217 per lakh population, while it was reduced to 142 in 2020. The mortality rate was also reduced to 53% in 2015. The mortality was 32 per lakh population, which has decreased to 15 in 2020. The union government has set a target to increase the number of Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras to 10,000 by March 2024. Chemicals and Fertilizers Ministry said that the government has invited applications to open Jan Aushadhi Kendras in 3,579 blocks of 406 districts of 26 states and union territories. It highlighted that under the scheme, 739 districts of the country have been covered and 8,610 stores have been opened till the last month. The ministry said that about 15,000 crore rupees have been saved of the general public under this scheme. Over 187 crore 46 lakh COVID vaccine doses have been administered in the country so far under the nationwide vaccination drive. The Health Ministry said over 19 lakh 13,000 vaccine doses were administered yesterday. The ministry said more than 19 crore 91 lakh balance and unutilized COVID vaccine doses are still available with the states and union territories to be administered. The ministry said a total of 2,527 new cases were recorded in the last 24 hours. India's active caseload currently stands at 15,079. The recovery rate is currently at 98.75%, and a total of 1,656 COVID patients recovered in the last 24 hours. According to the ministry, 33 deaths were reported in the last 24 hours. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan today met Prime Minister Narendra Modi in Delhi. In a tweet, Mr. Modi said they discussed the good governance initiatives of the Madhya Pradesh government and how their transformative schemes are bringing a positive change in people's lives. The Information and Broadcasting Ministry has advised all private satellite TV channels to immediately refrain from publishing and transmitting any content which is violative of the provisions of the Cable Television Networks Regulation Act. In its advisory, the ministry said in the recent past, several satellite TV channels have carried out coverage of events and incidents in a manner which appears to be unauthentic, misleading, sensational, and using socially unacceptable language and remarks. The ministry said it has been observed that channels have been making false claims and frequently misquoting international agencies and actors during reporting on the Russia-Ukraine conflict.
It said many of the journalists and news anchors of these channels made fabricated and hyperbolic statements intending to incite the audiences. The ministry said similarly on the recent incident in northwest Delhi, some of the TV channels used provocative headlines and videos of violence that may incite communal hatred among the communities and disrupt peace and law and order. The channels were also showing footages of a specific community, thus aggravating the communal tensions. It said fabricated headlines were sensationalizing and giving communal colors to the actions of authority. According to the Cable Television Networks Regulation Act, no program should be carried in the cable service which contains criticism of friendly countries and contains attack on religions or communities. All India Radio News is airing a weekly interactive program, Abhyas, aimed at reaching out to students and job seekers preparing for competitive examinations. The program is in Hindi and is broadcast every Saturday between 9:30 p.m. and 10 p.m. Listeners can tune in to the fourth episode of Abhyas on 100.1 FM Gold at 9:30 p.m. tonight. The topic for this episode is economics. Dr. Malika Kumar, Associate Professor of Economics at Sri Ram College of Commerce, New Delhi, will be responding to the queries of the aspirants. You can also access the program on Twitter at AIR News Alerts or on AIR News Official YouTube channel and also on the News on AIR app. The subject for the next episode on April 30th is sociology. The deadline for submission of questions is 27th of April. कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब. आपका अभ्यास हमारा प्रयास. News Services Division of All India Radio will bring an interview with Ram Prasad Subedi, Deputy Chief of Mission in the Nepalese Embassy in India. In our Spotlight program tonight, Mr. Subedi talks about various initiatives that the two countries have embarked upon and also stresses on the historical connections that the people of the neighboring countries enjoy. There is a free flow of friendship, I should say, between Nepal and India. As the rivers flow from north to south, the friendship flows very naturally and there is natural affinity. If you and I, if we two meet in third country, third capital, wherever, we happen to come close to each other, start talking and sharing. This is a kind of our identity, our strength, our affinity towards each other. This is not today's thing. This dates back to the Ramayana period, even earlier than that. In modern time, every Indian family, maybe across the border, you will see cross-border marriages, family links. Our friendship, we often compare as high as Mount Everest and as deep as Indian Ocean. To listen to the full interview, tune into FM Gold channel and additional frequencies from 9:15 p.m. onwards. This program will also be available on our YouTube channel News on AIR Official and our website newsonair.gov.in. You are listening to the Midday News on All India Radio. A reminder of the headlines before we move on. Prime Minister Narendra Modi to visit Union Territory of Jammu and Kashmir tomorrow to attend National Panchayati Raj Day function at Palli in Samba district. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in the Man Ki Baat program tomorrow. First, Lata Dinanath Mangeshkar Award to be conferred upon Prime Minister Narendra Modi in Mumbai tomorrow. Finance Minister Nirmala Sitharaman interacts virtually with several universities of United States for setting up foreign universities and institutions at Gift City in Ahmedabad. Defence Minister Rajnath Singh to honour the war heroes of 1971 Bangladesh Liberation War in Guwahati. Union Home Minister Amit Shah addresses Vijay Utsav celebrations at Jagdishpur in Bhojpur district of Bihar. Country is marching rapidly towards making India TB free by 2025, says Health Minister Dr. Mansukh Mandviya. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari inaugurates and lays foundation stones for 16 national highway projects in Jalgaon district of Maharashtra. DD Sports to telecast live Khelo India University exams starting from tomorrow.
In Santosh Trophy Football Championship, Karnataka to take on Manipur at Mallapuram, while Odisha to face Gujarat at Manjeri today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders to take on Gujarat Titans in Navi Mumbai and Royal Challengers Bangalore to face Sunrisers Hyderabad in Mumbai today. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle at AIR News Alerts. Welcome back to the midday news. Coal Minister Prahlad Joshi has said that at present 72.5 million tons of coal is available at different sources of Coal India Limited, Singareni Collieries Company Limited and coal washeries. In a tweet, Mr. Joshi said over 22 million tons of coal is available with thermal power plants. He said there is sufficient coal available in the country. The total coal production during 2021-22 has touched over 777 million tons compared to 716 million tons during 2020-21, recording a growth of 8.55%. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari inaugurated and laid foundation stones for 16 national highway projects worth 2,460 crore rupees in Jalgaon district of Maharashtra yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Gadkari said road connectivity is important for the transportation and milling of agricultural commodities in Jalgaon district, which is an important hub for banana, cotton and sugarcane production and has the highest banana production in the country. The minister said these road projects in the district will improve the connectivity of Gujarat, Maharashtra, Odisha and Chhattisgarh. University Grants Commission UGC and All India Council for Technical Education AICTE has advised students not to travel to Pakistan for pursuing higher education. In a public notice issued by UGC and AICTE, it has been highlighted that any Indian national or overseas citizen of India who intends to take admission in any educational institution of Pakistan will not be eligible for seeking employment or higher studies in India on the basis of such educational qualifications acquired in Pakistan. The notice further mentioned that the migrants and their children who have acquired higher education degree in Pakistan and have been awarded citizenship by India would be eligible for seeking employment in India after obtaining security clearance from Ministry of Home Affairs. India Post has warned the public against fraudulent websites claiming to provide subsidies and prizes through certain surveys and quizzes. Communications Ministry said over the recent days, India Post has been observing various websites getting circulated in social media such as WhatsApp, Telegram, Instagram and through emails and SMS claiming to be providing government subsidies through certain surveys. The ministry said India Post is not involved in any such activities like announcing subsidies, bonus and prizes based on surveys. India Post has requested people not to believe or respond to such fake and spurious messages or share any personal details. The Ministry of Civil Aviation will organize a mega yoga event, Yog Prabha at Safdarjung Airport, New Delhi on Monday. The event will be inaugurated by Union Minister of Civil Aviation Jyotiraditya Scindia. Over 500 officials of the ministry and its attached organizations will participate in the mega event. Common yoga protocol, lecture on yoga by expert, yoga demonstration will be some of the activities to be undertaken at the event. This event will help to create wider awareness among the participants about importance of yoga in daily life. Union Home Minister Amit Shah will be on a day-long visit to Puducherry tomorrow. He will be visiting Mahakavi Subramanya Bharati's Memorial Museum cum Research Centre and also Sri Aurobindo's ashram and will pay homage to the great leaders. Later, the Home Minister will participate in the inaugural function of the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo at the Convention Centre of the Pondicherry University. Mr. Shah will lay the foundation stones to various developmental projects in Puducherry in the afternoon. Union Home Minister Amit Shah today participated in Vijay Utsav celebrations at Jagdishpur in Bhojpur district of Bihar. Mr. Shah paid tributes to Babu Veer Kunwar Singh on the occasion of Vijay Divas. The Home Minister, along with thousands of people, unfurled tricolour and remembered contribution of Veer Kunwar Singh during freedom struggle. All historic moments pertaining to the valour of Veer Kunwar Singh were displayed at the venue on the occasion of Vijay Divas.
And now let's listen to a special program, Azadi Ka Safar, highlighting the importance of the day during the freedom struggle. आजादी का अमृत महोत्सव। Azadi Ka Safar with AIR News. Birth of a Nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. AIR News brings you a glimpse of the struggle every day. Leipong miam til bede Angang matho yaw bede 23rd April is remembered as Kongjom Day in Manipur every year to pay tribute to the war heroes of the Anglo-Manipuri War 1891. Na pangjaba Aram sam ga beju Manipuri people resented British interference in the internal affairs of Manipur. In March 1891, the British Army fired the first shot at Kangla with an objective of arresting Yuvaraj Tikendrajit. After the whole day's fighting on the 24th of March, the British declared a ceasefire. A meeting was called at Kangla between the representatives of people and the British administration. For a darbar to be held, 5 British officers were sent. When the talks failed, the Manipuri people attacked the British delegation. Knowing the serious situation of the British in Manipur, 3 powerful regiments of the British Army were sent via Silchar, Kohima and Tamil. To resist the advancing British column from Tamil, 700 Manipuris were sent to Thoibal under Wang Kherakpa and Yenkhoiba Major. At this critical time, the Maharaja sent 400 sepoys under the leadership of Pauna Brajbasi and Chongtha Mia Singh to oppose the British forces. But the Manipuri forces were outnumbered and the enemy was superior in arms too. When the war began, powerful British guns had fatal impacts at the fort of Manipur, but the gallant Manipuri warriors fought till their last breath to safeguard the territory and independence of Manipur. Manipur built 3 defensive places to fight against the invaders. The first one was at Palel, the second at Kakching, and the third was at Kongjom. Many Manipuris, including Pukramba Tanka, Kumbong Subedar, Leizang Jamadar, and Athokpa Diwan, sacrificed their lives. 2 Thankuls were also among those killed in hand-to-hand fight. On the 27th of April 1891, the British forces occupied Kangla. The hero of the battle, Major Pauna Brajbashi, is being honoured by the Manipuris as the epitome of patriotism and bravery. Till his last breath, he refused to surrender and bravely chose death over serving the British. Among others who fought gallantly in the battle were Major Chongtham Mia, Chinglen Sana, Khumbong Major, Loitongba Jamadar, Kaisa Jamadar, Heirang Kongja, and many more. The heroism of the gallant warriors is being passed down through generations in the form of a traditional ballad, Kongjom Parva. Every year, on the 23rd of April, the whole state of Manipur pays homage to those great warriors at the Kongjom War Memorial Complex. The solemn memorial is situated about 35 kilometers south of Imphal in Thoubal district, at the site where the battle was fought between Manipuri and the British. It stands there as a living symbol of the spirit of patriotism and heroism of the Manipuris. We also pay tribute to Vittal Bhai, resident of Surat, Gujarat. He was a school teacher at Bardoli. Vittal Bhai took part in the Forest Satyagraha 1930.
and was also involved in the Salt Satyagraha, April 1930. While participating in the Salt Satyagraha at Navsari, he was fatally injured in a police lathi charge. He was admitted to a hospital at Navsari, where he breathed his last on the 23rd of April 1930. We also remember Rao Singh. Rao Singh was a soldier in the Ludhiana Regiment of British Indian Army. He took leading part in 1857 War of Independence against the British rule. He was captured by the British soldiers and charged with mutiny and sedition. Rao Singh was sentenced to death and hanged on the 23rd of April 1858. AIR News salutes the brave martyr. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. See you in the next episode tomorrow. In Manipur, rich tributes were paid today to the brave sons of the state who made supreme sacrifice fighting against the British to protect the freedom of Manipur in the Battle of Khongjom during the 1891 Anglo-Manipuri War. On to sports, Daily Sports will bring the event of Khelo India University Games live to everyone's TV and mobile starting from tomorrow. The second edition of Khelo India University Games is being held from the 24th of April to the 3rd of May. It is the largest university-level sports competition in the country, intended to identify and train athletes in the age group 18 to 25 years for the Olympics and the Asian Games. The Games will be broadcast on DD Sports from 9 a.m. to 6 p.m. every day. In football, Kerala stormed into the semi-finals of Santosh Trophy Championship with a 2-1 win over Punjab at the Wayanad Stadium in Manjeri last night. Kerala captain Jijo Joseph scored twice, while Manveer Singh scored the solo goal for Punjab. Today, Karnataka will take on Manipur at Malappuram at 4 p.m, while Odisha will face Gujarat at Manjeri at 8 p.m. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans today at Dr. D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai at 3:30 p.m, while Royal Challengers Bangalore will face Sunrisers Hyderabad at Brabone Stadium in Mumbai at 7:30 p.m. The World Book and Copyright Day, also known as World Book Day, is being observed today to honor the great works of authors all over the world. English Language Day is also observed annually on this day with the goal of celebrating multilingualism and cultural diversity through language exploration. English Language Day marks both the birthday and date of the death of famed writer William Shakespeare. A quick look at the weather update for the day. National capital Delhi is likely to have strong surface winds during the day. Minimum temperature was recorded at 24 degrees, maximum expected around 40 degrees. Mumbai is expected to have mainly clear sky. Chennai is likely to have a partly cloudy sky. Kolkata likely to have generally cloudy sky with light rain. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Union Territory of Jammu and Kashmir tomorrow to attend National Panchayati Raj Day function at Palli in Samba district. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in the Man Ki Baat program tomorrow. First Lata Dinanath Mangeshkar Award to be conferred upon Prime Minister in Mumbai tomorrow. Finance Minister Nirmala Sitharaman virtually interacts with several universities of United States for setting up foreign universities and institutions at Gift City in Ahmedabad. Defence Minister Rajnath Singh to honour war heroes of 1971 Bangladesh Liberation War in Guwahati. Union Home Minister Amit Shah addresses Vijay Utsav celebrations at Jagdishpur in Bhojpur district of Bihar. Country marching rapidly towards making India TB free by 2025, says Health Minister Dr. Mansukh Mandavia. And with that, we end the midday news. नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। श्री मोदी सांबा जिले के पल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों को गुवाहाटी में सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत 2025 तक तपेदिक मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डीडी स्पोर्ट्स कल से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का सीधा प्रसारण करेगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज कर्नाटक का सामना मणिपुर से और ओडिशा का मुकाबला गुजरात से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी। दोपहर समाचार में अथर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और सांबा जिले की पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 3,100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के शुरू हो जाने से बनिहाल और काजीगुंड के बीच 16 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री 7,500 करोड़ रुपए लागत वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस मार्ग की आधारशिला रखेंगे। वे अमृत सरोवर पहल की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल इकाइयों का निर्माण और उनका विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में दिया जा रहा है, जिनका इस वर्ष फरवरी में निधन हो गया था। पुरस्कार की घोषणा करते हुए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने कहा है कि श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर देश का कुशल नेतृत्व किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक गिफ्ट सिटी में विदेशों के विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आज कई प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ वर्चुअल वार्ता की। इसमें अमेरिका के 14 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में गिफ्ट सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आज असम जा रहे हैं। असम सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले और भाग लेने वाले राज्य के सशस्त्र बल कर्मियों को सम्मानित करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार कुल 105 युद्ध नायकों को सम्मानित करेगी।
कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड और कोल वॉशरीज की विभिन्न खदानों में 7 करोड़ 25 लाख टन कोयला मौजूद है। श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के पास अभी भी 2 करोड़ 20 लाख टन से अधिक कोयला बचा है। उन्होंने कहा कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। कोयला मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 77 करोड़ 70 लाख टन हुआ, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 71 करोड़ 60 लाख टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.55% अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश 2025 तक तपेदिक से मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक उपचार से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। श्री मांडविया ने कहा कि तपेदिक के मामलों की दर घटकर लगभग 34% हो गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,527 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 1,656 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से 33 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। वर्तमान में 15,079 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 406 जिलों के 3,579 प्रखंडों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदक फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के 739 जिलों को शामिल किया गया है और पिछले महीने तक 8,610 केंद्र खोले जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आम लोगों की लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। समाचार कक्ष से मैं नीलम मलकानिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रखंड स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य मेलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। 18 से 22 अप्रैल के बीच विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के एक प्रखंड में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत देश भर में 1 लाख मेलों का आयोजन किया गया। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य मेलों में निःशुल्क जांच सेवाएं और दवाएं मुहैया कराई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों के 5वें दिन 4,53,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और देश भर के लगभग 496 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। 59,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आईडी बनाई गई और 17,000 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड जारी किए गए। हजारों लोगों की उच्च रक्तचाप, क्षय रोग और मधुमेह की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह में बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने सैकड़ों लोगों के साथ तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर कुंवर सिंह के योगदान का स्मरण किया। विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थल में वीर कुंवर सिंह की वीरता से संबंधित सभी ऐतिहासिक क्षणों का प्रदर्शन किया गया। ये उत्सव महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 23 अप्रैल 1858 को जीत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। श्री मोदी सांबा जिले के पल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों को गुवाहाटी में सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत 2025 तक तपेदिक मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डीडी स्पोर्ट्स कल से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का सीधा प्रसारण करेगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज कर्नाटक का सामना मणिपुर से और ओडिशा का मुकाबला गुजरात से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 2460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 16 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि देश में सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाले जलगांव जिले में परिवहन और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए सड़क संपर्क की बहुत जरूरत है। श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ संपर्क बढ़ेगा। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भी सड़क संपर्क में वृद्धि होगी। भारतीय डाक विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब्सिडी और पुरस्कार प्रदान करने का दावा करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि कुछ वेबसाइट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करने का दावा कर रही हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय डाक विभाग सर्वेक्षण के आधार पर सब्सिडी, बोनस और पुरस्कार की घोषणा जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। डाक विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के संदिग्ध और भ्रामक संदेशों पर विश्वास न करें और कोई भी व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने भारत नेपाल संबंधों के नए आयामों के बारे में भारत में नेपाल के दूतावास के उप प्रमुख राम प्रसाद सुवेदी के साथ बातचीत की। श्री सुवेदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए हाल ही में शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया। There is a free flow of friendship, I should say, between Nepal and India. As the rivers flow from north to south, the friendship flows very naturally, and there is natural affinity. This is not today's thing. This dates back to the Ramayana period. Even earlier than that, our friendship we often compare as high as Mount Everest and as deep as Indian Ocean. ये साक्षात्कार आज रात आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें। मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज में अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और तरीकों का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान भी चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं।
मंत्रालय ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की घटना पर भी कुछ टीवी चैनलों ने कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वाली सुर्खियों और हिंसा के वीडियो का इस्तेमाल किया। चैनल एक विशिष्ट समुदाय के फुटेज भी दिखा रहे थे, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के अनुसार मित्र देशों की आलोचना वाला और धार्मिक या समुदायों की निंदा करने वाला कोई भी कार्यक्रम केबल नेटवर्क पर नहीं चलाया जाना चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय सोमवार को नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर वृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा आयोजित करेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों के 500 से अधिक कर्मी इसमें भाग लेंगे। इस दौरान सामान्य योग आचार, विशेषज्ञों के व्याख्यान और योग प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम होंगे। इससे दैनिक जीवन में योग को लेकर व्यापक जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। डीडी स्पोर्ट्स खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के आयोजन का सीधा प्रसारण करेगा। इन खेलों का दूसरा संस्करण 24 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया जा रहा है। खेलों का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद आधे घंटे के हाइलाइट्स और अन्य कार्यक्रम होंगे। उद्घाटन और समापन समारोह का डीडी स्पोर्ट्स और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण होगा। प्रसारण अंग्रेजी और हिंदी कमेंट्री तथा आकर्षक ग्राफिक्स के साथ किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विभिन्न खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने के